Hello, good day everyone. Now Chef Shahabuddin will explain for us by Indian language how we'll make fried rice for all location. The ingredients it is very simple: oil, garlic, onion, carrot, capsicum, cabbage, spring onion, soya sauce, white pepper or black pepper, salt. If soya sauce salty, no need salt. Soya sauce not salty, we need salt. Plus boiled rice. हाय आज हम लोग बना रहे हैं फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। इसके लिए क्या चाहिए? इसमें ऑयल है, ऑयल रखा, चॉप गार्लिक, चॉप ऑनियन, गाजर है और कैप्सिकम, और इसमें है कैबेज, और इसमें है स्प्रिंग ऑनियन, प्याज का पत्ता। इसमें सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस, वाइट पेपर और नमक। और इसमें रखा बॉयल किया हुआ राइस, बॉयल करके पहला इसको ठंडा करके उसको इसमें रखा 170 ग्राम पर पोर्शन। First we put oil. We heat oil little. Then we add garlic. गार्लिक थोड़ा सा, We saute garlic little. After that we added onion. हाँ प्याज डाला, गार्लिक और प्याज डाला साथ में, एक साथ में गार्लिक और प्याज दोनों साथ में। Then we added carrot. उसके बाद डालेगा गाजर, क्योंकि गाजर पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पहले डालना। Then we add capsicum. ये ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ा टाइम पता करेंगे। Then we added cabbage. थोड़ा कैबेज, वाइट कैबेज 50 ग्राम लिया। थोड़ा वाइट पेपर, Little white pepper. एंड सॉल्ट लिटिल बिट, Little bit salt. अब हम राइस ऐड करेंगे इसमें। We add boiled rice. राइस के साथ जो डार्क सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस, Little soya sauce. Dark color. Low salt. स्प्रिंग ऑनियन। Last one we add spring onion. स्प्रिंग ऑनियन ऐड का 30 ग्राम, आधा अभी डालेगा, आधा टॉपिंग के लिए, गार्निश के लिए। The gram and the quantity by gram we send for you by recipe. No worry. Now only see and focus for steps. Now it is ready to serve. It's ready to serve. Here is our plate. Only that. Thank you very much. It is very simple and very easy. Thank you all.